Good morning, students. Today we are going to start a first unit of syllabus, that is electrostatics. Now, electrostatics, the word electro is related to charge and statics means at rest. So, in this unit unit is related to the study of charges at rest. Study of charges at rest means we are going to discuss about the electric field, electric potential of the charges which are at rest. So it is the electrostatics is whole about the study of charges at rest. Students, you might have noticed that nowadays we feel small electric shocks when we touch the knob of the metallic knob of door or car handle or anything. So that is due to the static electricity which we will discuss in this chapter. So, in the beginning of the chapter, let us first of all define the term electric charge. Now, before defining the term electric charge, first of all, let us study one another term which is work function. Work function is the minimum energy which is required to eject an electron from the surface of a body. एवरी बॉडी हैज़ अ डिफरेंट वर्क फंक्शन. किसी भी बॉडी के सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन को जब इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. व्हेन वी रब एनी टू बॉडीज देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर. जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है दैट बॉडी लूजेस सम इलेक्ट्रॉन्स, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होंगे और उस बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी बॉडी पे शिफ्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव टू एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स A and B. These are two different materials, atoms of two different materials A and B. Suppose A has lower work function and B body has higher work function. When we rub the two bodies, then the body A will lose some of the electrons while the body B will gain some of the electrons. Now I am just supposing here कि suppose A body has 10 electron, 10 proton and B body has 12 electron and 12 proton. We know that कि atom is neutral. So initially the negative and positive charges, they are equal number of electrons and protons are there. Now we rub the two bodies. We rub body A and body B. Then suppose body A loses, it gives its 2 electrons to the body B. Now what will happen? The body A has now 8 electrons and body B has now 14 electrons. Now if we see, body A has less number of electrons, means it is deficient of electrons as compared to the protons, while the body B here, it has excess of electrons as compared to the body A. Now earlier the two bodies were neutral, but now we can say the body A is now becomes positively charged and the body B gets now negatively charged. तो when we say कि body पे कोई charge है, कब कह रहे हैं हम? Either the electrons are deficient or electrons are in excess as compared to the number of protons. So this is how we define electric charge. Electric charge is a property of a body which tells us about the excess or deficiency of electrons in an atom. तो चार्ज हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स या तो एक्सेस में होंगे या इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स इन दैट एटम. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. वन इज द पॉजिटिव चार्ज and other is the negative charge. So two types of charges are there, the positive charge and the negative charge. Now the SI unit of charge, it is coulomb. SI unit of charge, it is coulomb on the name of the scientist and symbol is capital C. Now we will write the dimensional formula for the electric charge. Now we have a mathematical expression that current I
करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स इट इज चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज इज Q, time is T. Now we have studied in class +1 that there are 7 fundamental quantities जिनके जो units हैं वो हम further उनको simplify नहीं कर सकते. फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स जो हैं हमने वहां पे डिफाइन किए थे. इन +1 वी डिस्कस्ड अबाउट ओनली मास, लेंथ, टाइम. मास के किलोग्राम, लेंथ के मीटर, टाइम के सेकंड, और बाकी क्वांटिटीज के जो यूनिट हैं वो फंडामेंटल की टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. तो देयर वी स्टडीड दैट करंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी. जो करंट है वो भी हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके जो यूनिट्स हैं वो फर्दर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते. तो करंट के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? एम्पियर. टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में? टी से. तो AT इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज. चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला को AT इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बिकॉज करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसके यूनिट्स को हम सिंप्लीफाई करके नहीं लिख सकते. So this is the dimensional formula for charge. Now let us discuss about the various ways of charging a body. We have 3 different ways to charge a body, that is charging by friction, charging by conduction, and charging by induction. Now friction, as the name indicates, when one body is rubbed with the other body. When one body, जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं, then चार्ज जो है वहां पे बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज जो है वो आएगा. रब्ड विद अदर बॉडी. एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बहुत से आप बच्चों ने देखा होगा, आपने किया होगा कि when we rub a scale with our hair, तो scale begin to attract small bits of paper. It means कि when we rub the scale with our hair, the scale acquires some charge. So this way of charging, when we rub one body with another body, is called charging by friction. The material having lower work function loses electrons, while the other having higher work function gains the electrons. So this is the charging by friction. Another way is charging by conduction. Charging by conduction means when the charge flows from one body to another via conducting path. एक conducting path के through जब charge एक body से दूसरे body में flow करे. Here we have a neutral sphere in the first case. Then we take a metallic rod, charged rod, which is having negative charge, and we made it in touch with the sphere, metallic sphere, and the charge moves from rod to the sphere. और जब हमने rod को remove किया तो जो charge है वो repulsion की वजह से sphere पे uniformly distribute हो गया. So this way of charging, जब charge एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करे, या और अदर वेज कि वी हैव वन कंडक्टर, वी हैव अनदर कंडक्टर, उनको हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है, जिसके पास चार्ज है, उसमें से दूसरी बॉडी पे चार्ज शिफ्ट हो जाएगा. चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए. तो चार्जिंग जो है बाय दिस वे, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय conduction. Now the other way is charging by induction. Charging by induction means when one body is not in contact with other body, not in contact with other body. Unlike कंडक्शन में हमने बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ पे जब हमने एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं रखा, विदाउट कांटेक्ट जब चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज बॉडी पे आता है, बॉडी चार्ज्ड होएगी, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. सो हियर वी हैव एन एग्जांपल. हियर इन द फर्स्ट डायग्राम वी हैव अ मेटालिक स्फीयर in which
अगर हम इस स्फीयर को इनिशियली देखें तो स्फीयर जो है उसमें एटम्स होंगे। स्फीयर को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया है। स्फीयर में एटम्स होंगे जो कि न्यूट्रल है। एटम पे कोई चार्ज नहीं है, एटम्स आर न्यूट्रल। देन नेक्स्ट हमने एक मेटल रॉड, एक चार्ज, वी ब्रिंग अ चार्ज रॉड नियर द स्फीयर। देन व्हाट विल हैपन, अब हमने नेगेटिवली चार्ज रॉड स्फीयर के पास लेके आए हैं, तो यहां हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है that comes near this surface due to the negative charge of the rod. Due to the negative charge of rod, जो this end of the sphere which is near the rod gets positively charged because ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रॉड के वो इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरी साइड पे कलेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड पे कलेक्ट हो गए और जो सेम साइड है उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन हमने यहाँ पे ग्राउंड वायर कनेक्ट कर दी। ग्राउंड वायर कनेक्ट कर दी। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, वी टेक अर्थ्स पोटेंशियल टू बी जीरो। अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको हम जीरो लेके चलते हैं। अगर हम किसी भी बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। Either electrons move from body to the earth or from earth to the body, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, दे आर बाउंड टू अदर एटम्स बाय इंटरएटॉमिक फोर्सेस। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे कैन मूव। तो यहाँ पे जब हमने अर्थ वायर लगाई, अर्थ के साथ कनेक्ट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे फ्लो टू द ग्राउंड, दे मूव टू द ग्राउंड सच दैट जो पोटेंशियल है वो जीरो बन गया। बट ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये यहीं पे रिजाइड करेंगे बिकॉज ऑफ दिस रॉड। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ड्यू टू दिस जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इधर ही रिजाइड करेंगे। देन वी विल रिमूव द ग्राउंड वायर और जो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट पे अक्यूमुलेट हुआ था वो रिपल्शन की वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन दिस केस जो एबोनाइट रॉड है उसको हमने मेटालिक स्फीयर के साथ टच नहीं किया और जो मेटल स्फीयर है दैट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। सो दिस वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी is called charging by induction. Let us consider one more example. Here we have two spheres which are placed on insulating stands. The spheres are placed on insulating stand in both the cases because earth is a conductor and our body is also a conductor. अगर हम उसको होल्ड करेंगे तो जो चार्ज है वो ह्यूमन बॉडी के थ्रू ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वी हैव टू प्लेस द मेटालिक स्फीयर ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। नाउ in the first diagram we have the two metallic spheres which are uncharged and they are connected to each other, they are joined with each other, they are in contact with each other. Then in the second diagram we bring a positively charged rod near the sphere A. Now due to the positive charge on the rod जो negative charge है हमारे पास वो A के left end पे accumulate हो गया due to the force of attraction, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ए साइड पे शिफ्ट हो गए तो बी हैज, पीछे बी के पास क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। देन द टू स्फीयर्स दे आर सेपरेटेड और हमने जो अभी रॉड को रिमूव नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही जगह पे रिजाइड कर रहे हैं, वाइल जब हमने बी को दूर शिफ्ट किया तो रिपल्शन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड व्हेन वी रिमूव द रॉड इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए विल आल्सो गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अकाउंट ऑफ रिपल्शन। सो दिस इज हाउ द स्फीयर्स आर चार्ज्ड अगेन without making any contact with the rod. So this way of charging a body when the two bodies are not at all connected with each other, this is called charging by induction. So these are the various ways we have studied here various ways to charge a body, that is charging by friction, charging by conduction and charging by induction. Thank you.